So today we are going to see the chapter Thermal Properties of Matter, and actually it is the fourth lecture of this chapter, and our today's topic is specific heat capacity. Okay, so let us see what is this specific heat capacity. So first of all we will discuss the specific heat capacity of solids and liquids. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं फॉर सॉलिड एंड लिक्विड. सो सी इफ आई एम कंसिडरिंग वाटर एंड पैराफिन. ठीक है, देखो यहाँ पे सपोज ए कंटेनर एंड इन कंटेनर 1 हियर वी विल गोइंग टू कंसिडर वाटर एंड इन कंटेनर 2 हियर वी आर गोइंग टू कंसिडर पैराफिन. ठीक है, एक कंटेनर में हम लोगों ने लिया हुआ है वाटर, दूसरे में हम लोगों ने लिया हुआ है पैराफिन, एंड द अमाउंट ऑफ वाटर इज 1 kg एंड द अमाउंट ऑफ पैराफिन इन कंटेनर 2 इज ऑल्सो 1 kg. ओके, मतलब हम लोगों ने जितना वाटर लिया हुआ है उतना ही पैराफिन भी कंसिडर किया हुआ है. इफ आई एम गोइंग टू हीट द बोथ कंटेनर फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स इफ आई एम गोइंग टू हीट दिस कंटेनर 1 फॉर 10 minutes, so also container 2 is heated for 10 minutes. Means for same time heat is provided to the both the containers. ठीक है, सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग दोनों कंटेनर को हीट कर रहे हैं. सो इफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और द मास ऑफ सब्सटेंस इज सेम एंड द टाइम ऑफ हीटिंग ऑफ बोथ द कंटेनर इज सेम, so we will observe that the temperature rise of paraffin is twice that of the water. We will observe that the rise in temperature of paraffin is twice as that of the water. मतलब ऑफकोर्स जब हम लोग हीट करेंगे तो दोनों के टेम्परेचर इंक्रीज होंगे, टेम्परेचर विल राइज हियर. ठीक है, तो पैराफिन में जो टेम्परेचर राइज होगा वो वाटर के टेम्परेचर से डबल होगा. अब ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, और इससे हम लोगों को कंक्लूजन क्या मिल रहा है? हालांकि हमारे जो सब्सटेंसेस हैं दे आर हैविंग सेम मास एंड दे आर बीइंग हीटेड फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम. सो बाय दिस एक्सपेरिमेंट वी कंक्लूडेड दैट द डिफरेंट सब्सटेंसेस रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट टू कॉज द सेम टेम्परेचर राइज ऑफ 1 degree C. 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए डिफरेंट सब्सटेंसेस को डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट लगता है. ठीक है, हर सब्सटेंस के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रहेगा फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर दैट विल बी डिफरेंट, और इसी को हम लोग शो करते हैं इन द टर्म ऑफ स्पेसिफिक हीट, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल. ठीक है, तो इफ द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू दिस कंटेनर इज डेल्टा क्यू. Okay, delta Q will be amount of heat given or we can say absorbed. ठीक है, given out or absorbed to the substance, and if m be the mass of substance and if delta T be the temperature or change in temperature of the substance, then at that time I can define the specific heat capacity as a specific heat capacity is denoted by S, and it is equal to delta Q upon M into delta T. This is the formula for specific heat capacity, that is delta Q upon M into delta T, where delta Q is amount of heat absorbed or given to the substance, M be the mass of the substance, and delta T be the change in temperature of the substance. So this equation basically give the specific heat capacity of the substance. ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं कंसिडर कर लेती हूँ if amount of substance or mass of the substance is 1 kg, if I am going to consider the mass of the substance is 1 kg, and the change in temperature, that is delta T, is also equal to 1 degree C.
Okay, if I am going to consider the mass of the substance is 1 kg and change in temperature is 1 degree C, then at that time the specific heat capacity S will equal to क्या हो जाएगा ये? सो ये हो जाएगा डेल्टा Q डिवाइडेड बाय मास है हमारा 1 kg, टेम्परेचर चेंज भी 1 है, तो 1 इंटू 1 दैट मीन्स 1. सो हम लोगों को S मिलेगा. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विल बी इक्वल टू डेल्टा Q. Now we can define this specific heat capacity. So here is the definition of specific heat capacity of the solids and liquids. So it is defined as the amount of heat per unit mass absorbed or given out by the substance to change its temperature by 1 unit. Okay. So the specific heat capacity is nothing but the amount of heat per unit mass absorbed or given out by the substance to change its temperature by 1 unit. ठीक है, and its formula will be S is equal to delta Q upon M into delta T. Okay, now by seeing this formula we can write the unit for this specific heat. So see what will be the unit for specific heat. तो यूनिट हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं SI यूनिट. सो SI यूनिट विल बी क्या बनेगी? डेल्टा Q दैट इज हीट. यूनिट ऑफ हीट इज जूल, सो इट विल बी जूल डिवाइडेड बाय मास. यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, सो ये हो गया जूल पर किलोग्राम. टेम्परेचर इट कैन बी मेजर्ड इन डिग्री C और अनदर यूनिट में बी जूल पर किलोग्राम केल्विन, because temperature is also measured in the term of kelvins. So this is the SI unit of the specific heat capacity. Its CGS unit will be so joule. In CGS system it is converted into erg, kilogram. CGS system gram and degree C, and one more unit erg per gram Kelvin. So this is the CGS unit and this is the SI unit of specific heat capacity. Okay, now see if this specific heat of the substance is measured in the terms of moles. ठीक है, मास सब्सटेंस को मास में मेजर करने की जगह, ठीक है, सब्सटेंस को मास में मेजर करने की जगह अगर हम लोग इसको इन टर्म्स ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, then that type of specific heat is called as molar specific heat. That is called as molar specific heat capacity and it is denoted by C. ठीक है, फर्क क्या रहेगा? That amount of substance is measured in terms of moles instead of kilogram. ठीक है, केजी में मेजर करने की जगह हम लोग इसको किस में मेजर करेंगे? मोल्स में. तो यहाँ पे मोल्स को हम लोग यहाँ पे शो करेंगे म्यू से. ओके, तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे? S इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखो, S इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन, यहाँ पर मास हम लोगों ने लिया था M, दैट इज इन kg. हियर वी विल टेक म्यू इनटू डेल्टा T. सो बेसिकली दिस इज द मोलार स्पेसिफिक हीट एंड सॉरी मोलार को हम लोग किससे शो करें? C से. सो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन म्यू इनटू डेल्टा T. दिस इक्वेशन विल गिव द मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलार स्पेसिफिक हीट एंड इट्स यूनिट विल बी SI यूनिट. अगर हम लोग इसकी देखते हैं, सो व्हाट विल बी द SI यूनिट? ये डेल्टा Q दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट मेजर्ड इन जूल. मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, मोल की यूनिट है हमारे पास मोल. टेम्परेचर में बी इन डिग्री C और अनदर यूनिट में बी जूल पर मोल केल्विन. सो बेसिकली दिस इज द SI unit of the molar specific heat. Okay. Now see, this is basically in the case of solids and liquids.
ठीक है, इसे हम लोग कहाँ पर डील कर रहे हैं? इन द केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. सो दिस इज basically the specific heat capacities in the case of solids and liquids. What about the gases? What about the gases? So now let us see the specific heat capacity of gas. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखना है specific heat capacity of gas. So in the case of gas, we know very well that the temperature is very important property of the gas. Okay, that means if there is slight change in the temperature, there will be considerable change in volume and pressure of the gas. ठीक है, गैस के केस में क्या होता है कि अगर गैसेस का टेम्परेचर थोड़ा भी चेंज होता है तो उसका जो क्रॉसपॉन्डिंग प्रेशर और वॉल्यूम होता है उसके अंदर एक्सट्रीम चेंज आता है ड्यू टू द स्लाइट चेंज इन टेम्परेचर. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, the specific heat capacity of gas can be defined in two forms. First one is principal specific heat capacities of the gases, and second one is molar specific heat capacities of the gases. ठीक है, दो टाइप से हम लोग इसको बता सकते हैं. पहला रहेगा प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड दूसरी टाइप रहेगी molar specific heat capacity. So let us see first of all the principal specific heat capacity of the gas. And जैसे कि हम लोगों ने बताया कि अगर इसका टेम्परेचर चेंज होता है गैसेस का तो इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है? ऑन द वॉल्यूम एंड ऑन द प्रेशर ऑफ द सिस्टम, प्रेशर ऑफ द गैस. ठीक है, तो इसी बेसिस पर हम लोग इसको जो स्पेसिफिक हीट है उसे कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर पर डिफाइन करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ द गैसेस. एंड फर्स्ट वन इज द प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस इज बीइंग कांस्टेंट, देन एट दैट टाइम हम लोग इसे डिफाइन कर सकते हैं. सो लेट अस सी, इट इज डिफाइंड एज the quantity of heat absorbed or released for the rise or fall of temperature of unit mass of a gas through 1 Kelvin, or we can say that through 1 degree C, when its volume is kept constant. Okay, so in the case of principal specific heat at constant volume, we are going to consider the mass of the substance. Okay, we are going to consider amount of substance in terms of mass. Amount of substance हम लोग कैसे consider कर रहे हैं? In the term of masses, that means unit mass. जैसे 1 kg एक particular amount हो गया. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग mass को consider करेंगे in the case of principal specific heat. On the other side, in the case of molar specific heat, we are going to consider the amount of substance in term of moles. ठीक है, that's why it is called as molar. तो प्रिंसिपल में हम लोग उसको मास मतलब यूनिट मास के फॉर्म में लेंगे, जबकि वहाँ पे मोल के फॉर्म में लेते हैं. नाउ इट्स सेकंड टाइप विल बी प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. नाउ आवर प्रेशर ऑफ द सिस्टम विल बी कांस्टेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय प्रिंसिपल को हम लोग शो करते हैं एस से. कांस्टेंट प्रेशर पे दैट मीन्स एस पी कहेंगे. कांस्टेंट वॉल्यूम पर इसे कहेंगे एस वी. ओके, सी इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड फॉर द राइज और फॉल ऑफ द टेम्परेचर ऑफ unit mass of the gas through 1 Kelvin when its pressure is kept constant. ठीक है, यहाँ पर भी मास हम लोग किस में लिए हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज इन टर्म ऑफ मासेस एंड प्रोसेस इज एट कांस्टेंट प्रेशर. सो दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ द gases. And its second type is molar specific heat capacity.
Okay, it is also having two type. Number one, molar specific heat capacity at constant volume, and the molar specific heat. So this molar specific heat at constant volume is denoted as CV. It is defined as the quantity of heat absorbed or released for the rise or fall of temperature of 1 mole of gas through 1 Kelvin or 1 degree C when its volume is kept constant. देखो सारी चीजें सेम है, just change is in the measurement of amount of substance. Here the substance is measured in the terms of moles. Okay, यहाँ पर हम लोग substance को कैसे measure कर रहे हैं? In the terms of mole. तो gases का measurement यहाँ पे mole के फॉर्म में होता है, ठीक है. So 1 mole of gas, अगर इसका टेम्परेचर हम लोग को इंक्रीज करना है 1 केल्विन से, सो उस टाइम पे जो हम लोग अमाउंट ऑफ हीट देंगे दैट इज कॉल्ड एज मोलार स्पेसिफिक हीट. एंड इट्स सेकेंड टाइप इज, सो इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्सॉर्ब और रिलीज्ड फॉर द राइज और फॉल ऑफ द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 केल्विन और 1 डिग्री C at constant pressure is called as molar specific heat capacity. ठीक है. सो यहाँ पर भी बात हम लोग कर रहे हैं in terms of mole and at constant pressure. ठीक है. It is noted by Cp. Now here is a relation between. So there is a relation between principal and molar specific heat. Okay. And that relation is represented by this equation, that is molar specific heat is equal to molecular weight into principal specific heat. Okay, so basically this is the formula which gives the relationship between molar specific heat and principal specific heat. Okay, so ये क्या है? molar specific heat, that is represented by C. This is equal to molecular weight. Molecular weight is represented by mu into principal specific heat. Principal specific heat is represented by S. So as we know that there are two types of molar specific heat, that is at constant pressure and at constant volume. Similarly, there are two types of principal specific heat at constant pressure and at constant volume. So on the basis of that, we can define the molar specific heat as Cp is equal to mu into Sp. This is one form. Another one is Cv is equal to mu into Sv. This will be the relation between the molar specific heat and principal specific heat. Okay, so by using this formula we can determine the relationship between the molar and principal specific heat. Okay, now next we have to see the heat equation. On the same basis, we have to see what will be the equation of heat, that is called as heat equation. So if I am saying that a substance has a specific heat capacity 1000 जूल पर किलोग्राम डिग्री C, ठीक है. मैं अगर कंसिडर कर रही हूँ कि कोई सब्सटेंस है हमारे पास, दैट सब्सटेंस इज हैविंग स्पेसिफिक हीट 1000 जूल पर किलोग्राम डिग्री C. It means that the heat energy of 1000 joule rises the temperature of 1 kg of substance by 1 degree C. इसका मतलब क्या हुआ है? ये मीनिंग है. And we have the formula of a specific heat, that is S is equal to delta Q upon M into delta T.
whereas with a specific heat, delta Q will be the amount of heat given or taken from the system, m be the mass of system, and delta T be the change in temperature. So from here we can calculate this amount of heat. ठीक है, मतलब जो बेसिकली हम लोग अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं, देखो इसी को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, Q अपॉन m इंटू डेल्टा टी. ठीक है, अगर मुझे यहाँ से Q निकालना है, सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज Q इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा टी इंटू s specific heat. So basically this equation will give the amount of heat. ठीक है, कितना हीट हम लोगों को रिक्वायर्ड है, ये बेसिकली हम लोगों को इस इक्वेशन से पता चल जाता है. सो दिस इज द मास ऑफ द सब्सटेंस, चेंज इन टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक हीट. ओके, सो इसे कहते हैं हीट इक्वेशन. एंड सिमिलरली हियर वी हैव टू डिफाइन द हीट कैपेसिटी. We have to define a term that is heat capacity, and it is also called as thermal capacity. It is also called as thermal capacity. So basically here we have to define the heat capacity, or it is also called as thermal capacity. Let us define this heat capacity. So it is the quantity of heat needed to raise or lower the temperature of the body by 1 degree C or 1 Kelvin. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को अमाउंट ऑफ टेम्परेचर बता दिया गया है 1 डिग्री या 1 डिग्री सी या 1 केल्विन से हम लोगों को या तो रेज करना है या तो फॉल करना है. ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों को कितना अमाउंट देना पड़ेगा. सो हियर ऑलरेडी वी हैव द इक्वेशन फॉर हीट, दैट इज Q इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा टी इंटू एस. ठीक है, ये इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास है. टेम्परेचर हमें कितना बढ़ाना है, या तो 1 डिग्री से या तो 1 केल्विन से, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू m इंटू 1 इंटू एस. सो द इक्वेशन विल बी Q इज इक्वल टू m इंटू एस. दिस इक्वेशन इज बेसिकली टेल्स अबाउट द हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी. ओके, एंड okay, basically this is the thermal capacity.